A very good evening, my dear viewers. I greet you today because I am really at a very august place, that is the Punya Bhumi of Mithila. As you all know, this is Vivekanand Jha, an author, academician, and public intellectual. Today, of course, it is a very auspicious day, the birth anniversary of the father of the Constitution, that is Sri Bala Sahib Ambedkar ji. And my dear viewers, I would like to share with you the sort of the presentness of my own experience as and when I happen to visit this Punya Bhumi of Mithila, which happens to be a very my own birthplace. Today I reached here and I take this particular opportunity to make a historic announcement, in as much as all of you know that I wrote a pioneer book on living legends in the world, that is the living legends of Mithila. And while I wrote that particular first the volume of that particular book, I indeed made some sort of commitment to myself that by the grace of divine, I will definitely write at least 3 volumes of that, or 3 editions of that. So first edition I already wrote, and which got a huge appreciation and of course a very good assessment from one and all. A lot of eulogies poured in for highlighting the great achievers from the land of Mithila, from straddling both India and Nepal, because I picked up 25 topmost achievers from myriad field of specializations. And then, as I already said with you, my own feelings, my intrinsic feelings, that definitely I would love to write at least 3 editions of the living legends of Mithila. We all know the entire world had to pass through some sort of catastrophe, and it was near apocalypse like scenario, but by the grace of divine, at least we are, the entire mankind or humanity happens to be relieved as of now. Because at least now the normalcy, to some extent or to a great extent, we can say, has been restored in all our lives. And that's why after 4 years I am visiting this sacred land of Mithila, and today I happen to be in Darbhanga, because today only I arrived in Darbhanga in the afternoon, and I am sitting today closeted with one of the most revered professors of this particular Mithila Bhumi, because I personally have been a witness to professor of the principal of MLSM college here in Darbhanga, who tried to enforce discipline in the educational system. My dear viewers, not only he is an educationist par excellence, but he has been an innovator in Makhana, in the field of Makhana, one of the priceless treasures of Mithila, first man or one of the pioneers in terms of innovating with the idea of expanding the overall production of Makhana. And my dear viewers, it will be very apt, and this also is one of the fantastic books he has written. The professor Sri Vidyanath Jha has written one of the fantastic books, that is for all of your reference and perusal. My dear viewers, so as I was just trying to tell you that in fact that I was really looking forward to kick-starting the process of writing the second edition of the Living Legends of India, Living Legends of Mithila, and I take the divine privilege to make this announcement today, sitting at the residence of Professor Vidyanath Jha, that indeed we have already taken the first step towards that particular direction of writing the second edition of the Living Legends of Mithila. And most importantly, I am kick-starting the particular process with Professor Vidyanath Jha being the first very legend about whom I am going to profile. And this is indeed the process of writing the second edition of the Living Legends of Mithila has begun today with a bang, because I do seek the blessings of the father of the Indian Constitution, Dr. B.R. Ambedkar Sahib, as well as as I already informed you, that we are very much on the eve of Judicital, which happens to be one of the prominent festivals of this Punya Bhumi of Mithila. So this is a unique announcement I wanted to make, because profiling of Sri Vidyanath Ji will is just about to begin. And as it was a process last time as well, that whoever I profiled last time as
our legends. I also had interviewed most of them, if not all. So definitely it is a process of interaction with our first legend which has just kick-started. Vidyanath Ji, and since it is we are going to have a conversation in Maithili because it is the living legends of Mithila, and Professor Sahab is very much conversant with English, Hindi and Maithili, but because for the greater understanding of all Maithils, straddling or living across the globe, Maithili is one of the sweetest languages, as you all know, and being I do trace my genesis from Mithila and my education from Kolkata, so I am a brand ambassador of both Bengali as well as Bihari and as well as Maithili, and I tell you authoritatively because since I stayed in Calcutta for a substantial part of my life as well as here in Mithila I trace my genesis from. So both the languages are equally sound, equally sweet, and really very very sweet language, that is Maithili. So Vidyanath Ji, I very lovingly and affectionately call him Vidya Babu because as and when he was a professor, he was the principal of MLSM College. I was witness to his very pioneering steps which he had institutionalized to set the process of to set right the process of education which had almost gone astray. So because of his pioneering initiative, which I myself was witness to, I saw a substantial improvement in the scenario. Of course, that means complete transformation was not feasible because the attitude until unless there is attitudinal change, things cannot happen. The metamorphosis to such a substantial level cannot happen. But indeed, it was a tangible change that was visible to one and all. विद्या बाबू अपने के बहुत बहुत स्वागत कर रहल छी। आजुक दिन बहुत पावन छे, क्या तो बाबा साहब अम्बेडकर जी हमरा सबके पूरा देश के संविधान देलखिन, हुनकर आइ जन्म दिवस छनि। एहन सौभाग्य हमर जे आइए जे छे से अपने दर्शन भ रहल अछि, अपने के सामने अनाउंसमेंट करैत हमरा बहुत प्रसन्नता भेल जे आइ लिविंग लेजेंड्स ऑफ मिथिला के सेकंड के वॉल्यूम के प्रारंभ भ रहल छै। देखि 2025-2024 के लास्ट तक एक पुस्तक पूरा मार्केट में एक विमोचन जरूर हेतै। आ भारत और नेपाल दुनू के जोड़े द्वारा 25टा दिग्गज के जे हम पहिल पुस्तक पर लेने चलिए पहिल एडिशन में अहू में लऽ रहल छै। अपने ईश्वर के आशीर्वाद से अपने पहिल लिविंग लीजेंड्स के रूप में आइ दरभंगा से अपने के प्रोफाइल शुरू भ गेल। तो अपने जे छे से मखाना पर बहुत काज के लिए देखिए अपने के शायद कियो आदमी एते काज नहीं केने हेता जे हमरा जे तरह के नॉलेज है। तो अपने किछु अपने परिचय देत करी मखाना पर फोकस करे कि अपने के बारे में हमर सब जते मिथिला के मैथिल बंधुगण छथि, मैथिल के मैथिल छथि जत भारत आ विदेश में सबके अपने थोड़ बहुत अपने के बारे में किछु मखाना के प्रति अपने किछु अपन शिक्षा के जोड़े मखाना पर करी प्रकाश दियो। विद्या बाबू पहले तो हम कह दी जाए संजोग से अम्बेडकर जी पर एक प्रोग्राम चले अपने जन ट्रेन में छो बेर बेर फोन हो चले व्हाट्सएप वाला मैसेज हो चले मैसेजिंग तो एठाम प्रोग्राम चला एठाम अम्बेडकर जी के दरभंगा म्यूजियम लग मूर्ति छलन है ओहिठाम कार्यक्रम चले हम गेल छलहुँ हमको बजाओल गेल छल। अपने एलहुँ दरभंगा सौभाग्य छै कार्य क्षेत्र जन्मभूमि एतऽ अछि, कार्य क्षेत्र कतौ अन्यत्र अछि, लेकिन तैयो मैथिली के लेल हम देख रहल छी जे एकटा बहुत अन्योन्याश्रय कही छै से भाव अछि आ यहाँ के खींच कर लबैए एहिठाम। कार्यक्रम शुरू कऽ रहल छी, ईश्वर करथुन कार्यक्रम अपन पूर्णता दिस पहुँचे। हमरा हमर जन्मभूमि केवटी भेल, एहिठाम से करीब करीब 17-18 किलोमीटर उत्तर छै दरभंगा जयनगर रोड पर। हमर पिताजी शिक्षक छला है स्वर्गीय वेदानंद झा, हमर माता स्वर्गीय विष्णुकला देवी, और केवटी वह गाँव है जिठाम से हमर 3 टर्म फर्स्ट MP श्री नारायण दास छला वही गाँव के। हुनकर बहुत बातक प्रभाव हमरा पर अछि। जहिया से जन्म से हुनका देखलियन ताबत जाबत तक ज्ञान प्राण भेल होश भेल ताबत तक तो हुनकर ओ जे चैप्टर छलन है राजनीति में उत्कर्ष वाला से तो करीब समाप्त हो चुकल छलन, लेकिन तैयो फ्रीडम फाइटर तो चला है। गाम गमाइत में पूरा पुरोपट्टा में जो हुनका लेल भाव छले वो सब आँखि से देखने छिए, तो कतौ न कतौ भावभूमि में वो बात सब छै। और हमरा जीवन पर डॉक्टर लक्ष्मण झा हम सब एक हिसाब से उनका भगवाने माने छलियन। ओहो फ्रीडम फाइटर दुर्धर्ष स्वतंत्रता सेनानी छला है, मिथिला यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से हो भेला
हम सब हुनका ओहिठाम जाइ छलहुँ हैं। पूरा त्यागी तपस्वी जकरा कहि सकै छियै, राजनीतिमे सेहो और एकेडमिशियन पार एक्सेलेंस तो चला है। तैँ हुनका कर्पूरी ठाकुर एहिठाम वाइस चांसलर बनौलखिन, ओहिसँ दोसर वाइस चांसलर छलखिन। हमर वनस्पति हम विज्ञान हमर विषय, हम बोटनिस्ट छी। हम मैट्रिकुलेशन तक केलहुँ वह सहरसा जिला, जतऽ हमर पिताजी शिक्षक छला है। आब तऽ मधेपुरा जिला भऽ गेलै, मुरलीगंज लग सर्वोदय बहुउद्देशीय विद्यालय अमारी। और तकर बाद हम फेर CM साइंस कॉलेज आबि गेलहुँ, एतहिसँ इंटर केलहुँ, BSc केलहुँ। ताबत फेर मिथिला यूनिवर्सिटी खुजि गेल छलै तऽ मिथिला यूनिवर्सिटीसँ MSc केलहुँ बॉटनीमे। तकर बाद हम फेर MPhil करऽके लेल से मेरठ यूनिवर्सिटी चलि गेलहुँ। ओतऽसँ फेर हमरा CSIR के फेलोशिप भेटल और हम रांची यूनिवर्सिटीमे ओहिठाम गेल रहौँ। केंद्रीय विद्यालय दीपा टोली छै, ओतऽ हम 3 मासके लेल से शिक्षक छलहुँ केंद्रीय विद्यालयमे। लेकिन ताबत हमरा फेर फेलोशिप ई सब भेट गेल तऽ हम फेर उम्हर चलि गेलहुँ MPhil PhD करऽके लेल। ताबत एम्हर फेर अपॉइंटमेंट भेलै कमीशनसँ लेक्चररके लेल, तऽ हमर बहाली CM साइंस कॉलेजमे भेल। ओहिठाम हम करीब 26 बरस से शिक्षकके रूपमे रहलहुँ। और तकर बाद 2009 में प्रिंसिपल के बहाली भेलै तऽ हम प्रिंसिपल भेलहुँ। और 2टा कॉलेजमे हम दू बेर करीब 12 साल के पूरा अवधि छलैए। कऽ कऽ हम 1 साल पहिने से रिटायर भेलहुँ हैं। MRM कॉलेजमे प्रिंसिपल छलहुँ, फेर MLSM कॉलेजमे प्रिंसिपल छलहुँ, और विश्वविद्यालय में बॉटनी के यूनिवर्सिटी प्रोफेसर भऽ कऽ से रिटायर भेलहुँ। यह हमर मोटा मोटी जीवन यात्रा छी। और हमर काज जे अछि से मुख्य रूपसँ हमरा लोग मखानके लऽ कऽ जनैए। मखान पर हम काज केलहुँ। रांची विश्वविद्यालय में हमर गुरुजी छलाह है डॉक्टर उपेंद्र नारायण झा, जे कि वह सुपौल जिला के छलाह है। गाँव में शारदा सिन्हा के नैहर छनि, वह हुनकर गाँव छलन है। आब नहि छथि, कैंसरसँ हुनकर मृत्यु भऽ गेलनि। लेकिन हमरा जन्म गेलहुँ ओतऽ हुनका ओहिठाम, तऽ ओ कहलनि जे मखान पर नहि काज भेलैए, तू मखान पर काज कर। तकर बाद हम घूमि फिर कऽ जत्र तत्र से काज केलहुँ। 6 मास हम IARI इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली में छलहुँ। किछु दिन हम NBRI लखनऊ में छलहुँ। किछु दिन से सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में छै, ओतऽ छलहुँ। ओतऽ घुमा फिरा कऽ हम सब तरीके काज सब केलहुँ। मखानमे हमरा रुचि जागल, और जतेक काज हम केलहुँ, जतेक लिटरेचर हम कलेक्ट केलहुँ, तऽ हमरा से भेल जे मखान पर कोनो ऑथेंटिक कोनो पुस्तक नहीं छै। रिसर्चो पेपर नहिए जकाँ छलैए। तऽ रिसर्चरके मतलबो सएह होइ छै, जतऽ गैप छै ततऽ अहाँ ओकरा तकियौ आ ओहि गैपके भरऽके चेष्टा करियौ। रिसर्च तऽ सएह होइ छै। तऽ हम केलहुँ, और हमरा ओहिके दौरान से जतेक छलैए ओहि समय तक इन्फॉर्मेशन। 2003 में हमर पुस्तक मखान कऽ कऽ अंग्रेजीमे मखाना कऽ कऽ छै, ओ ICAR से छै, तऽ ओ निकललै। और ततहिसँ फेर बात बहुत आगू बढ़लै। ओहि समयमे एग्रीकल्चर मिनिस्टर छलाह है चतुरानंद मिश्र छलाह है। बादमे फेर नीतीश कुमार भेला, तऽ भेलै जे ताबत हमसब ई बातके बहुत ठाम मीटिंग सब सेमिनार सब होबऽ लागल छलै, वर्कशॉप होबऽ लागल छलै जे मखान पर शोध केंद्र होबाक चाही। ई बात सब तऽ एयरमे छलै, अखबारमे जहाँ तहाँ छलैए। एकरे परिणाम भेलै जे 2003 में बुझाइए एहिठाम ICAR के इंस्टीट्यूट नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मखाना कऽ कऽ NRC फॉर मखाना कऽ कऽ दरभंगामे खुजलै। ओहि समयमे NRC फॉर लीची कऽ कऽ मुजफ्फरपुरमे मुसहरीमे खुजलै। लेकिन एकरा की कहबै, एकरा दुर्भाग्य कहबै जे ओकर NRC स्टेटस एखन धरि छैहे, ओ आओर आगू बढ़ि रहलैए। लेकिन एहिठाम जे छै मखानवला, ओ ओकर इंडिपेंडेंट स्टेटस नेशनल स्टेटस छलै, आइके तारीखमे नहीं छै। ओकरा पटनाके जे ईस्टर्न रीजनवला कम्प्लेक्स छै ओकरा संगे अटैच कऽ देल गेलैए। काज ओना चलि रहल छै, लेकिन जे गतिसँ होबाक चाही से गति नहीं छै। तो मोटा मोटी और ओकर बाद हम चूँकि बॉटनिस्ट छी, और एथनिक इम्पोर्टेंस या कल्चरल इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स पर काज करै छी मिथिलाके संदर्भमे। तऽ हमर शोध पत्र सब जतेक उपयोगमे अछि गाछ वृक्ष वनस्पति, ताहिसँ हमर ओहिपर हम जहाँ यथासम्भव प्रयास करै छी। एथनो बॉटनी हम अपनाके एथनो बॉटनिस्ट बुझै छी, किया तऽ हम लोक महत्वके जतेक छै, लोक व्यवहारमे जतेक वनस्पति छै, तखन से हम चाहै छी ओकरा हम उजागर करी। ओकरा पाछू जे साइंस छै, ओहि लोक व्यवहारके पाछू तकरा हम प्रकाशमे आनी। हमर असलमे सएह उद्देश्य छै। बहुत बहुत धन्यवाद विद्या बाबू। अपने जे छै, इनफैक्ट माय डियर व्यूअर्स, वी हैव सीन Vidya Babu. He is very economical in terms of his words. He is not the one who goes for just praising himself or who believes in any sort of narcissism. So you have seen that
In fact, we are going to start this particular, this writing of this particular book. And as you know, even in case of the previous book, it took me almost 3 years. So it will take not less than 2.5 years. But hopefully, by the grace of divine, we are starting this journey. And by 2024, mid-July, we'll be able to launch this particular book. And of course, coincidentally, we are going to start our project with Vidya Babu. Vidya Babu last अपने का जैसे चूँकि and my dear viewers, I would like to take this opportunity to inform all of you that in case of just the earlier edition, that is Living Legends of Mithila, Vidya Babu was one of the very very esteemed guests who had launched this book here in Darbhanga. So I would like to seek his opinion. Vidya Babu अपने लिविंग लेजेंड्स ऑफ मिथिला देखलिए, विमोचनों में भाग ले लिए, दरभंगा के कलेक्टर साहब चंद्रशेखर जी कहने चल के विमोचन अहू में अपने चलिए, देखिए 14-15 विद्वान मिलकर कहने छलकी ना होता मंच पर। तो अपने का जे छे से ऐसा जना अपने के जान रहा छे भारत नेपाल दुनू को जोड़े के एकटा जे छे प्रयास रहले हाँ अहू पुस्तक से रहते। तो इस संदर्भ में अपने के मने मिथिला के कौन तरह से ये पुस्तक मिथिला के जोड़ सके छे, अपने के की एकटा राय अछि। अपने एक विद्वान पुरुष छे, मखाना के पूरा विश्व मंच पर आनलिए, अनेक प्रयासरत छे, एहि पर अपने के की सुझाव है, की विचार है, ई कहना बेहतर देखल जाए ज्योग्राफी के हिसाब से ठीक छै, भूभाग छै मिलल जुलल छै, लेकिन राजनीतिक दूटा देश भ जाइ छै। लेकिन की कहबै ओकरा मनोवैज्ञानिक के दृष्टिकोण से देखियो, भाव के दृष्टिकोण से देखियो, तो हमरा लगैए जे तराई जरा मधेश कहै छियै, एम्हर जे मिथिला के भूभाग छै, कनियो कोनो अंतर नहीं छै। राजनीतिक रूप से, भौगोलिक रूप से, पॉलिटिकल रूप से छै अलग, लेकिन ओना एके छै, कतौ अंतर नहीं छै। ई जे प्रयास कर रहलहुँ हैं अपने, तो हमर ई आग्रह है जे एहना ठीके विचार अछि जे जोड़ी दुनू भाग के जे इंटेलेक्चुअल्स है, बौद्धिक रूप से जे क्षमतावान पुरुष लोकनि छथि, महिला लोकनि छथि, हुनका सबके एकठाम आनि कऽ ई जे पृष्ठभूमि छै, भावभूमि छै, तकरा भरी। तऽ ई तखने हेतै जखन कि इंटेलेक्चुअल्स के अपने पकड़बनि जे छथि, किया तऽ रिप्रेजेंट कोनो समय में समाज के रिप्रेजेंट तऽ इंटेलेक्चुअले करै छै, बौद्धिक रूप से जे विशिष्ट छै वएह करै छै। तऽ पुरना जे संस्कृत के ज्ञान पद्धति सब छलैए, देखते छियै लोक कहै छै जे एम्हर उत्तर भारत में उम्हर काशी, एम्हर मिथिला आ उम्हर फेर नवद्वीप लोक मानै छै। आब एखन मॉडर्न एजुकेशन के समय में सेहो एक पर एक लोक सब भऽ गेला, एक से एक लोक सब भऽ गेला है। ई जे त्रिभुवन यूनिवर्सिटी छै, ओहिठाम एक से एक विद्वान लोकनि छथि। तऽ हमर यह आग्रह है जिनकर कॉमन इंटरेस्ट छनि, तऽ ओहूठामक लोक के एकदम जोड़ल जाए, देख कऽ जिनका लिविंग लीजेंड वास्तव में कहै छियनि, जिनका विषय में जनश्रुति छनि, अपने नहीं बाजि कऽ हुनका विषय में लोक बजै छनि। मतलब तो यह भेलै लिविंग लीजेंड के मतलब भेलै जकरा कि सब जनै छै, अपना ओकरा कहऽ के नहीं काज छै, लोक ओकरा विषय में बजै छै, ओकर प्रतिश्रुति जे छै से एहि लेवल के छै, सएह भेलै लिविंग लीजेंड। एखने मानि लिअ हमरा ओहिठाम मानस बिहारी वर्मा छला, लिविंग लीजेंड छला, हाल में हुनकर देहांत भेलनि। डॉक्टर मोहन मिश्र छला, दुनू पद्मश्री छला, दुनू लिविंग लीजेंड छला। तऽ अहिना नेपालो के ताकि कऽ और हम सबके समावेश करी एक संगे, और फिर सबके संग लऽ कऽ चली। किया तऽ पुस्तक जे होइ छै से एहि बीच में हमरा एगोटे कहलनि लोक परलोक दुनू बनै छै। ई सब एकेटा विद्वान हमरा कहलन, हमरा से लिखक फूल पर, मिथिला में फूलक संसार पर हुनकर आग्रह छनि जे हम लिखी। एकटा हमरा फुर्सत नहीं भऽ गेल, नहीं लिख सकलहुँ हैं, लेकिन हमरा जो तगादा केलन, हमरा एतबे शब्द बजला, ऐसे लोक पर लोक दुनू बनै छै। तऽ हम चिंतन हम ठीके करै छी, तक विद्वान चला है, बेसी नहीं कहि के एतबे ओ कहल है। तऽ तहिना लोक पर लोक दुनू होइ छै। आब जीवन काल में तऽ जे छै से छैहे, बादो में ही रहि जाइ छै, पुस्तक तेहने चीज होइ छै। तो अपने से एकरा लिखिए, समावेश कऽ कऽ आ ई तऽ जहन दुनिया तऽ रहबे करतै, लोक चलि जाइए लोकक, लेकिन लोकक कैल काज जे छै, हम तऽ कहै छियै जे जहिना लोकक अपन भाग्य होइ छै, तहिना लोकक कैल काजो के भाग्य होइ छै। आ ओ तऽ इंटेलेक्चुअल के पुस्तक के रूप में, रिसर्च पेपर के रूप में हेतै, ओ रिवर्बरेट करैत रहै छै। एखनो हम तकै छलहुँ, जेना अपने के हम कही जे मखान पर हम काज केने छी, एहि बीच में एकर जियोग्राफिकल टैगिंग के लऽ कऽ बहुत विवाद सन स्थिति भेलै। एकर मखान के नाम से एकर होबाक चाही, मिथिला मखान के नाम से होबाक चाही, एकर परिप्रेक्ष्य में हम चर्चा करब फेर बाद में। तो ओहि क्रम में हम ताकऽ लगलहुँ, हमर अपन मत अछि जे ई मखान शब्द जे छै से ई की कहै छै बादक शब्द छै। मख अन्न ई बनाओल शब्द छै,
तो किछु ने किछु हम कते गोटे विद्वान के कहलियनि एकर किछु दोसर नाम देशज नाम होबाक चाही। हम एखनो लागल छी जे महाकवि विद्यापति जे एतेक बृहत हुनकर साहित्य छनि, बहुत जिला, बहुत दिन तक जिला, तो कतौ न कतौ हमरा लगैए जे कोनो न कोनो नाम से जँ मखानक नाम से नहीं छै तो कोनो न कोनो दोसर देशज नाम से चर्चा होबाक चाही। हम एखनो एहि काजमे लागल छी, हमरा समाधान नहीं भेटल है। लेकिन हमरा संस्कृत यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब छथि एखन शशिनाथ बाबू, ओ हमरा वाचस्पति द्वितीय जे समौल के छलाह है, हुनकर ग्रंथ छनि श्राद्ध चिंतामणि, ओहिमे से ताकि के हमरा देलनि कि देखियो हैया एकर नाम से ढेरोन छै देशज नाम। हम कहलिए एकदम किछु ने किछु कोनो न कोनो नाम एकर होबाक चाही। तो अहिना तकला से होइ छै। ई सब चीज तो एहन चीज रेफरेंस बुक भऽ जेतै, पॉपुलर लोकल इम्पोर्टेंस के चीज नहीं भऽ कऽ स्थायी महत्व के चीज हेतै। आ तकरा लोक तकतै 100 साल 200 400 साल के बाद से लोग एकरा तकते। Thanks a lot. बहुत बहुत धन्यवाद Vidya Babu. Indeed, my dear viewers, of course, what Vidya Babu was trying to emphasize upon is indeed it is priceless. In as much as the book of this particular degree and magnitude is not only left for the current generation but for the posterity yet to follow, the generations yet to be born. Now, before the conversation started, my dear viewers, I would like to make this particular announcement, or I would like to make this particular observation that the Honorable Vidya Babu was trying to share his own perception with me, that even Prime Minister Modi of late has become hugely interested in terms of promoting Makhana, and he has asked, he has in fact exhorted upon the people to accelerate the pace of producing Makhana, because Makhana especially was a product of Mithila, or the product of such places which usually remain submerged in rivers or submerged in waters for the entire say at least for a part of the year. But after Prime Minister's announcement or Prime Minister's exhortation, even such places which are dry comparatively have begun their focus in terms of producing Makhana. So the genesis of Makhana is Mithila, and one of the pioneers who has been speaking to all of us today and who is going to be a part and parcel of the second edition of the Living Legends of Mithila, Sri Vidyanath Jha ji. He basically has been a pioneer in terms of highlighting the overall importance of the very, very important product that is Makhana, which can form a building block in terms of our revenue generations from export. So that is the overall importance of Makhana, and Vidya Babu has been a pioneer of it. So that is why I thought of kick-starting our mission of writing the Living Legends of Mithila Part 2 with none but a Mithil ceremony, a pioneer in terms of Makhana production, Sri Vidyanath, an educationist, Dr. Sri Vidyanath Jha ji. So with these words, my dear viewers, I greet all of you on this very, very special occasion. I have been an author of the Living Legends of Mithila Part 1, Hindi version Mithila ke Adnik Diggaj, as well as I wrote Yes, I Am Bihari, a world popular book, Haan Main Bihari Hoon. So now, I greet all of you. Actually, I would like to, emphasize on this very important, delicate issue of foreign policy. Even in case of first edition of the Living Legends of Mithila, my very avowed mission was to, as I already highlighted it, and once again I am going to reiterate, that is, from the foreign policy perspective, Madhesh community, as what our honored guest Vidya Babu has already informed all of you, is a very, very dominant and powerful community in Nepal, and Mithil community forms a very, very the important part of that Madhesh community. So therefore, bringing Mithils from both India and Nepal would definitely or will definitely constitute a very, very important part of India's foreign policy, especially in the context of Chinese infiltration, into the affairs of Nepal. It becomes absolutely incumbent, on the part of the government of India to keep Madhesh community, in favor of India's foreign policy. So therefore, this particular document, that is the Living Legends of Mithila, even part 1 and part 2, it is going to play a pivotal part in terms of bringing India and Nepal together in case of such delicate times when China is trying to pull Nepal towards itself.
So therefore, the living legends of Mithila Part 2 will play a very, very pivotal role in terms of bringing Maithil community straddling both India and Nepal together in form of a fraternal bonding. So that is a very, very important and avowed mission behind writing the living legends of Mithila Part 2. So विद्या बाबू, अपने चूँकि मखाना पर बहुत काज करिए और अपने के जीवन के बहुत बहुमूल्य समय मखाना पर रहल और भारत और नेपाल के दुनू के जोड़े में मखानो बहुत जैसे सार्थक होइ छै। क्या तो अपने से जे पता चलल हाँ जब मधेश कम्युनिटी या मैथिल जे छथि मधे वो सब मखाना से बहुत जुड़ल छथि, तो दुनू साइड मिथिला के मखान पर में पूर्ण रूप से जे से केंद्रित छै बहुत हद तक। एक विषय में किछु अपने के वक्तव्य। देखियो मधेश तो मिथिले के पार्ट है सांस्कृतिक रूप से, तो मखान ओहू पार होइ छै। हमरा एकटा वृत्तांत मोन पड़ि गेल जस्ट एकटा जे एकटा कोनो व्यापारी मखान के गुड़ी होइ छै से ओहिठाम से कलेक्ट कऽ कऽ नेपाल के तराई वाला भाग से कलेक्ट कऽ कऽ से एभर एहि पार लऽ आनलकै। आब ओहिठामक जे एक्साइज ऑफिसर छलाह हमर परिचित छलाह ओ ओकरा पकड़ि लेलखिन। आब ओ कहै जे कतऽ लिखल है जे नेपाल में मखान होइ छै, नेपाल में मखान नहीं होइ छै। अपने के हम कही जे उम्हर कोशी से लऽ कऽ एम्हर बागमती धरि जे 6-7टा जिला छै उम्हर तराई के मधेश के जिला छै ओतौ मखान जहिना एहि पार होइ छै भारत में तहिना ओहि पार नेपाल में होइ छै, कोशी से लऽ कऽ बागमती तक। आब हमर ई किताब ताबत तक पब्लिश भऽ गेल रहै और एक्साइज ऑफिसर जे छलाह दरभंगे में छलाह वो तो पोस्टेड छलाह वो निर्मली साइड में वह पकड़ने रहथिन। ओ हमरा ओहिठाम एला जे हमरा वो पुस्तक दिअ जे अहाँ लिखने छी। हम लिखने छी जे एडजॉइनिंग एरिया जे छै 7-5-6 डिस्ट्रिक्ट जे छै नेपाल के तहू में एकर होइ छै। तो ई पुस्तक से ओहि मुकदमा के ओ भेलै ओकर कन्विक्शन भऽ गेलै। ओ एविडेंस में ई पुस्तक के एविडेंस देलखिन ये देखियो ये लिखल छै आ ओकर कन्विक्शन भेलै जेना ओ चाहलखिन। तो आब देखियो ओ नेपालो के ई संपदा छै, केओ यदि कहऽ चाहै छै जे हम नेपाल में नहीं होइ छै तकर प्रमाण यही पुस्तक सब। तो ई भारत नेपाल संबंध में तो ओहिना छै जे पूरा जनकपुर पूरा सीता मैया सबटा ओ संस्कृति सब एके छै, एके रूप में छै। तैं जे किछु हम सब कऽ रहल छी ओ भारत नेपाल दुनू पर लागू होइ छै। कम से कम मधेश जे ओकर जे एरिया छै ओ एक संस्कृति छै, एक दाय बुझू ओकरा दाय जकरा कहै छियै हेरिटेज कहै छियै से एक छै। Thanks a lot, my dear viewers. You have heard now Vidya Babu, an expert on Makhana. He said that how India and Nepal can be integrated even on the basis of this one product which is common to both India and Nepal, that is Makhana. And therefore, I believe very sincerely, and even I would like to appeal to the foreign policy, the jars of foreign policy sitting in South Block, that this particular book, The Living Legends of Mithila, that is part 2, it will definitely bring both the Maithils from both India and Nepal together in a fraternal bonding for all time to come. So Government of India should consider the Living Legends of Mithila Part 2 as another a feather to its crown in terms of building up the foreign policy of the nation. This is the revelation, or you can say my own statement as an author of The Living Legends of Mithila Part 2, where my dear viewers, actually just now what Vidya Babu had just now said pertaining to two gentlemen, the living legends, the Dr. Manas Bihari Burma, the architect of Tejas, and Dr. Mohan Misra Padmasri. Both of them were incidentally Padmasri. I would like to just inform all of you that only after the Living Legends of Mithila Part 1 was written, when the Honorable Prime Minister Sri Modi was personally requested by me, because I wrote a book on Prime Minister Hindu nationalism, Delhi Beckons Raga for Namo. Only book Prime Minister Modi has launched on himself in Vibrant Gujarat Education Summit. So when I requested Honorable Prime Minister to launch The Living Legends of Mithila Part 1, Prime Minister had personally asked me to send the book. He visited the book personally, and the consequence of his reading or visiting the book was conferring Padmasri upon Dr. Manas Bihari Burma ji and Padma Bhushan upon Sarda Sinha ji. And both these awards were declared only after Prime Minister had visited the first edition of The Living Legends of Mithila. So, I just, in the very context, I just wanted to make this particular reference, that both those great, the legends, they already were portrayed by me in The Living Legends of Mithila Part 1.
So this is very important point, which our honored guest and our living legend in the part two was making. So that's what I wanted to corroborate, and I wanted to I add have to referred it. to Sardasena also. My guru came from that village. Okay. And as you said, Sardar Sinha, the guru of Dr. Vidya Babu, he also hails from the same village as Sardar Sinha ji does. Naihar, Naihar. Nayyar. And from deep core of my heart, I thank Dr. Sri Vidyanath Ji for giving me an invaluable time and for giving his very benign and invaluable consent to be a part and parcel of our upcoming second edition of the Living Legends of Mithila or Mithila ke Adunik Diggaj. Dhanyavad, thanks to all of you. Dhanyavad, and just wait and watch for this very scintillating second edition of the Living Legends of Mithila. This is Vivekanand Jha in conversation with our living legend, that is Dr. Sri Vidyanath Jha ji. Thank you.